base info types at PA30 as well for some of the other employees. Let's say I've hired a particular employee, but now I'm thinking to create the attendances for that employee. Earlier I have not configured the attendances, but now I have configured it, and now I want to give an attendance for to that particular employee. So now I can be able to go over there in system and redo that. But what is the initial step? Initial step, as in, like, what will be the first step of doing things? That will be hiring. But similarly, what can be the other actions apart from hiring? See, when we are saying hiring, there could be other actions also on employees, right? That we can take. like assigning employee ID, Assigning employee ID, no, change, no. What else? Like terminating an employee. yes, termination, What rehire, else? Rehire, correct. What else? retiring of employee. Retiring employee if anyone is getting retired. So Yes, things like that. Even we can also include some of the other things like promotions, and, like, let's say if employee is changing his business unit, department. department or business unit, or whatever we can say that organization unit also in some places. So then that we can configure through the help of the hiring action, or that we can configure through the help of which T code, PA40. 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 Okay, so let's go to the PA40 and let's see what we have over here. So today what we will do? What is the exercise for today? Would we hire new employees, or what would we do? No. Hiring new employees is the job of end users. We have to do something of consulting level, right? See, I'm executing PA40. Do I have any actions here? Can I see any actions? Nothing is available. Nothing. Zero. So what I'm gonna go over there and do is we have to create these actions for the end users. So that in a company, generally all of these things are generally run by end users only. Hiring employee, terminating new employee. Who are the consultants? Consultants are the one who generally configure these things as per the end user requirement, whatever, like, generally whatever he want to go over there and do with it. Okay, so we'll configure different types of actions. Let's say we can configure termination action, transfer action, promotion action, and things like rehire, salary increment, n number of actions I can like create. Okay, so let's create few actions today. So which are the actions that we will be creating? We'll be creating, let's say, hiring actions. Let's call it as hiring plus plus. We'll then be creating a promotion action. Let's call it a promotion plus plus. We'll then be creating a transfer action. Let's say, yeah, termination also. Let's say we want to transfer anyone, and then we can create plus plus. Let's say we want to do some salary increments. I want to do some, see, generally I can also do the salary increment in basic pay info type. What is the basic pay info type? What is the number of basic pay info type? 0008, right?
So generally, I can do the salary increment and basic pay info type directly as well. But what this mechanism allows me to do generally is, like, let's say I want to increment the salary of thousands of employees. So through the help of action only, I can be able to do through the thousands of employee directly. I mean, generally there is a thing which is called as fast action, through which we can do all of those things in a quick succession of time. Let's say I want to increase the salary by 10% or 5% or whatever may be the scenario. Okay, but like, let's say alongside with the salary increment, I want to execute certain number of info types as well. I don't only want to make the changes in 0008 basic pay info type, but I also wanted to do some changes in some of the certain other info types as well. So for that, while performing the salary increment plus plus, and then while performing the termination action, and then like, we will be configuring the termination action, how termination action is different from that, and then we will be configuring the rehire action. Okay, so these are the set of different these are the set of different actions that I want to configure in the system. Configure in the system, again, the configuration, where I will do the configuration, I'm in this is PA40, right? If I do slash in where I'm in an easy access screen, where would I do the configurations? Where would I perform the configurations? SPRO. SPRO, correct. So SPRO is the T code I generally use for all the types of configuration. So in SPRO, we have to do all of these configurations. Okay, I mean, there are different types of actions that we need to create. What will be the first step in SPRO? So I've uploaded recording sessions also for one of the some of the prerequisites. What I generally call it as the prerequisites. So prerequisites mean that you first have to complete those sort of activities in the system, and then only you could be able to generally go over there and do the hiring related configurations. What are those prerequisites? Prerequisites are that generally in personal management, uh, I've already uploaded it by that chance. I mean, like, first you have to go into the basic settings, and then these are the different types of prerequisites that is needed to be done. So, like, first we will maintain the user parameter. Why do we maintain the user parameter? Again, because we have to first decide that the configuration that we are doing for which geographical location, or sorry, we are doing for which country. Okay, so all of the configuration that I'm doing for India. So first and foremost thing before configuring any type of actions is to select user parameters. So here I can see that user parameters are 40. 40 is nothing but it is for India. So all you have to do is generally you have to go into the maintain user parameters, and you have to select India as, or 40 as your as the parameters that you wanted to do the configuration for. So for this, I've already uploaded the recording, so you can follow that. Alongside with that, there are a few other things as well. Uh, like maintaining the default values, how generally the default values are maintained for different branches, what are the number ranges. So everything I've uploaded it for that part. So now let's go straight up to the configurations. So for configuring the different types of actions, what are the steps? The first and foremost step is SPRO. Then we'll generally go into the personal management. Then after personal management, we generally go to the personal administration. Then after personal administration, generally we go to customizing procedure. Customizing procedures. Then in customizing procedures, we generally go to action. So you have to go to actions.
And then in actions, we generally go to define info groups. That's the first step. Define info group. In info groups only, you will be having three different steps. So in info groups, your first step will be user group dependency menus. User group dependency menus. Okay. So let's go into the user group dependency menus. So now we are into the user group dependency menus. See, now there are different ways of doing things over here. What we will be learning over here is that let's say, so there is also this common question that let's say I want to define a hiring action which is valid for all the countries. Are you understanding my question? Are you understanding my question? मैं एक उस तरह का एक्शन डिफाइन करना चाहता हूँ जो सारी कंट्री के लिए वैलिड है। मतलब देखो, मेरी एबीसी कंपनी जो भी है वो ऐसी भी हो सकती है कि लेट्स से इट इज़ बेस्ड आउट इन 4-5 कंट्रीज, या ऐसा भी हो सकता है। एंड मैं एक कॉमन एक्शन ऐसा रखना चाहता हूँ कि वो 4-5 कंट्रीज के लिए एक ही, मतलब 4-5 कंट्रीज के लिए वो एक पर्टिकुलर एक्शन अवेलेबल होना ही चाहिए। सो उस केस में जनरली हम 0-0 लेते हैं एज अ रेफरेंस। बट इन दिस केस, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हैं, ओनली फॉर इंडिया, आई मीन लाइक जनरली अगर मेरा यूज़र पैरामीटर 40 होगा तभी वो एक्शन मुझे दिखने चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के सिनेरियो के अंदर मैं क्या करूँगा, see this menu name you can give anything, like as of now I'm giving it 1A I'm giving for hiring plus plus। मैं डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे को कितने एक्शंस क्रिएट करने हैं। 1A आई एम गिविंग फॉर हायरिंग प्लस प्लस, 1B आई एम गिविंग फ्रॉम प्रमोशन, 1B आई एम गिविंग फॉर प्रमोशन प्लस प्लस, 1C आई एम गिविंग फॉर ट्रांसफर प्लस प्लस, and then salary, one second, let me note it down over here directly. 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F. So these are those things. Copy them. Oops. Okay, that I think so. We have duplication of this one. Okay. User group dependency menus. We have to click the user group dependency menus. Why I am checking the user group dependency menus over here is, I will tell you later. Generally, what happens through the help of user dependency menus, or you can simply go on help and check out the things over here as well. So basically, ये जो actions हम configure कर रहे हैं ये सिर्फ तभी valid रहेंगे जब आपका यूजीआर पैरामीटर मतलब कौन सा, यूजर ग्रुप पैरामीटर जो अभी मैंने सेट किया था वो 40 रहेगा। ठीक है, 40 इज फॉर व्हाट, इंडिया। सिमिलरली यूएस के लिए जैसे 10 होता है, कनाडा के लिए 07 होता है। सो दीज आर नथिंग बट टू डिजिट डिफरेंट codes that SAP has given for different country location. These things are also called as Molga grouping system के अंदर, but I'll hit enter and it will get sorted out. And यही सारे के सारे actions मुझे system में create करना है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं एक मेनू क्रिएट कर रहा हूँ कि मेरे को वहाँ पे देखना क्या है। सो आई एम क्रिएटिंग दैट मेनू। अभी जो बैकग्राउंड की सारी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, वी विल बी स्टार्ट डूइंग दैट one by one, taking steps one by one. So save this one first. So we have saved this one. Now we have these different actions that we wanted to configure. उसका हमने एक different menu बना लिया है। कहाँ पे बनाएंगे हम menu? We will create the menu in user group dependency menus. Okay. Then what is the next step after that? The next step after that is same menu path. सारा के सारा menu path same ही रहेगा, सिर्फ यूजर ग्रुप डिपेंडेंसी मेनू की जगह इस बार सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इन्फो ग्रुप्स के अंदर डिफाइन करने। सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी द इन्फो ग्रुप्स।
क्रिएटिंग इंडिविजुअल इन्फो ग्रुप्स। अभी मैंने क्या किया है, मैंने देखो इन्फो ग्रुप्स तो मैंने वैसे क्रिएट कर लिए हैं यूजर ग्रुप डिपेंडेंसी मेनू के अंदर, बट अब मैं इंडिविजुअल इन्फो ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। मतलब इन्फो ग्रुप्स कौन कौन से, जैसे 1A हो गया, 1B हो गया, 1C हो गया, 1D हो गया, 1E हो गया, 1F हो गया। सो बेसिकली इन्फो ग्रुप्स जब मैं कॉन्फ़िगर करने जाऊंगा तो यहाँ पे मैं चीज़ों को क्या डिफाइन करूंगा, मैं यहाँ पे ये डिफाइन करूंगा कि जब मैं अगर हायरिंग कर रहा हूँ तो किस किस इन्फो टाइप को कॉल होना चाहिए, और मतलब सॉरी किस किस इन्फो टाइप को कॉल होना चाहिए, एंड एट द सेम टाइम उन इन्फो टाइप्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। So this I have already discussed in one of the previous session, the just before the previous session, just the previous session before that, that a two-digit ID. What is info group? Generally, info group is a two-digit ID सेट फॉर बेस इन्फो टाइप्स। उसके अंदर मैं अलग अलग इन्फो टाइप्स लूंगा जिसको मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, एंड उन इन्फो टाइप्स को मैं कहाँ असाइन करूंगा, उन इन्फो टाइप्स के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन असाइन करूंगा। ऑपरेशन किस तरीके के हो सकते हैं, क्रिएट, कॉपी, डिलीट, डीलिमिट, डिस्प्ले, एंड आई मीन दीज आर द कॉमन वंस एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस। अब क्रिएट क्यों, कॉपी क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिएट एंड कॉपी? देखो सबसे पहले जब मैं एक्शन परफॉर्म करता हूँ हायरिंग एक्शन, तो क्या मेरे पास सिस्टम के अंदर कोई डेटा है क्या, एम्प्लॉय रिलेटेड, या कोई एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, लेट्स से आई वांट टू हायर शिवानी इन द सिस्टम, ओके, बट शिवानी की कोई डिटेल्स है क्या किसी भी इन्फो टाइप के अंदर? इन्फो टाइप का डेटा है बहुत सारे एम्प्लॉयज के लिए, बट शिवानी के स्पेसिफिक, मतलब शिवानी के लिए स्पेसिफिक कोई इन्फो टाइप का डेटा है क्या? नहीं है, राइट? आई डोंट हैव शिवानीज पर्सनल डिटेल्स, आई डोंट हैव शिवानीज बैंक अकाउंट डिटेल्स, आई डोंट हैव the employee ID which I want to generate for Shivani. I don't have the other things as well, right? So what I will be doing through the help of hiring, मैं वो सारी के सारी चीज़ें क्रिएट करूंगा। आई विल बी क्रिएटिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट लेट्स से अगर मुझे सिस्टम के अंदर शिवानी को टर्मिनेट करना है, या अगर मुझे उसे प्रमोट करना है, तो वो इन्फो टाइप डिटेल्स तो ऑलरेडी हैं, मैंने तो हायर कर लिया है शिवानी को, राइट? नाउ आई एम परफॉर्मिंग अ प्रमोशन लेट्स से आफ्टर 1 ईयर, तो मैं क्या करूंगा, उन डिटेल्स को कॉपी करूंगा, या डीलिमिट करूंगा, या डिस्प्ले करूंगा, या इट कुड बी एनीथिंग, लाइक इन द केस ऑफ टर्मिनेशन, most of the info types are generally delete, but some of the info types are delimit। क्यों? क्योंकि मुझे सिस्टम में उसका रिकॉर्ड चाहिए। लेट्स से कभी मेरे को उसको रीहायर करना हुआ तो सिस्टम में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि व्हाट पोजीशन दैट शी वाज हायर्ड फॉर, उसका एम्प्लॉय आईडी पहले क्या था। सो ऑल दोस थिंग्स आई वुड बी रिक्वायरिंग इन द सिस्टम। So these are the fundamental logics that you have to understand. These are the things that you have to understand, policies you have to understand, that okay, if I'm configuring the hiring action, so I have to create everything in the system from scratch. While if I'm promoting, then I don't need to create anything. I just have to copy it, and जहाँ जहाँ पे चीज़ों को नई तरीके से क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, I will execute those things at that point of time. So things like that. So let's take these info type individually, and let's start configuring them individually. So we'll go into the info groups. So in an info group, first I will go with 1A. 1A है, right? मेरा यहाँ पे 1A hiring plus plus. So hiring plus plus. What I would go over there and do over here is, like, see, user group मुझे यहाँ पे common ही रखना है, new entries of course 40, user group will be common. Here I generally have to take a 7-digit code. यहाँ पे मुझे कोई भी एक 7-digit character में ले सकता हूँ या कुछ भी ले सकता हूँ. I will be explaining this part. Info group modifier क्या होता है, I will be explaining this part. But as of now you have to understand that you have to take a 7-digit character. Any 7-digit character should be fine with you guys. Any 7-digit character. So as of now, let's say I am taking a 7-digit character as with your something. Sequence number 1. अब ऑपरेशन क्या करना है मुझे? सी नाउ हियर इट विल शो मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूं मैं यहाँ पे? हायरिंग। सो आई विल बी क्रिएटिंग द डेटा, राइट? INS
क्रिएटिंग, सबसे पहला इन्फो टाइप, एक्शन मुझे क्रिएट करना है. Again 40. Let's say I'll take one over here, which is the organization assignment. Or yeah, let's go with 0 only. Then we will see if we need to make any course correction. INS, create, 0001. This is the second info type. This is the organization. See, these are the list of info type. This is the organization assignment info type that I'm taking. Organization assignment. Again 40. अब देखो ये यूजर ग्रुप का फंडा यहाँ पे ये है कि everything that I am generally doing, I wanted to do it for the country grouping 40 only, which is India. तो ये जो reference user group जो मैंने यहाँ पे mention करके रखा हुआ है 40, that's why I have to maintain it over. जब मेरा reference user group, that is country specific user group अगर 40 होगा, that is India होगा, तो then these things needed to be called. And यहाँ पे मैं क्या mention कर रहा हूँ, I'm maintaining the sequences. Can I mention 02 over here? And can I mention like 0002, let's say? Should system accept? क्या ये accept हो सकता है? Let's say I'm writing this. What do you think so? क्या मैं execute कर सकता हूँ क्या इस चीज को? क्या मैं save कर पाऊंगा इस चीज को? Can I be able to save it? Let's try saving it. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? An entry already exists, right? क्योंकि मैंने देखो sequence same डाल दिया है 0202. That's why I have to change the sequence over here. It'll be 03. Now I'll hit enter and see, now I can be able to save things. तो ये तीनों के तीनों entry save हो गई. Similarly 04, fourth number sequence. मैं कितने भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे, राइट? लाइक if I only want to keep it to 3 info type, that is also fine. And if I want to go over there and create additional info type, that is also that I can do over here in the system. Let's say after that I want to call addresses. मैं चाह रहा हूँ कि system के अंदर address save हो while performing the hiring action. Let's say after addresses, what I want is the sequence number 5 is to, let's say I want to create a basic pay, or let's say I want to create a 0007 info type, which is the plan working time. Let's say after that I want to create, I'm taking this Infogroup ID same. ये आपको अलग अलग maintain करने की ज़रूरत नहीं है. You generally have to take the same only. You don't have to maintain it differently. Doesn't need it to be 06 INS again. What? That I'm creating everything. Creating 0008. Let's say I want to create communication info type 40. ये कोई कोड नहीं है. This is just the random 7 digit I am taking. Random anything. 7 characters. That I will explain later. What is the meaning, like where we will generally call these 7 characters. We generally use it for defaulting the things. Hit enter. Now I can save this one as well. Save. So it has been saved. Let me do this thing. Let me copy this one. So I've copied this one. This one is same over here. Let us go back. Go back again. Now, अब देखो मैंने 1A के लिए तो create कर लिया. This has been created. What next?
वन बी राइट, मेरे को सिमिलरली वन बी के लिए भी क्रिएट करना पड़ेगा कि प्रमोशन के अंदर मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ सिस्टम के अंदर. सो आई विल अगेन गो टू द इन्फो ग्रुप. देखो अभी मैंने वन ए लिया था, अब मैं वन बी के लिए सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन करूंगा. Okay, so in this case, uh, one second, let me delete all of this. So similarly, one C. Similarly, let's say one D के लिए भी delete कर देते हैं. Similarly, let's say also delete it for one E. Let's also delete it for one F. Let's do the base level configuration once again. Info group. अब मुझे वन बी के लिए पहले कॉन्फ़िगर करना है. ठीक है. न्यू एंट्रीज. आई कॉपी दोस थिंग्स. अब देखो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ. जब भी मैं एम्प्लॉय का प्रमोशन कर रहा हूँ, क्या मुझे इन्फो टाइप वापस से क्रिएट करने की ज़रूरत है? मैं तो प्रमोशन एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ ना. मेरे को तो किसी एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, हायर तो करना नहीं है, या कुछ नए तरीके से उसका डेटा तो क्रिएट नहीं करना है, राइट? आई हैव टू सिंपली प्रमोट हिम. एम आई क्रिएटिंग द डेटा फ्रॉम एवरीथिंग? क्या मेरे को, मैं जब मैं प्रमोशन परफॉर्म कर रहा हूँ, क्या मुझे एड्रेस को भी क्रिएट करने की ज़रूरत है क्या? एड्रेस तो ऑलरेडी है ना उस एम्प्लॉय का, मैंने हायर किया था, राइट? Yes. So see here we will do couple of operations over here. What I mean, like what sort of operations generally we do? We generally copy. Copy मतलब जो है वैसा के वैसा ही रहेगा वो. It's like that. You don't have to change anything. Like yeah, we can copy, let's say action info type as well. Uh, let's copy similarly. Which is this one? This is organization assignment. मैं इसको भी copy करना चाहता हूँ कि I want to keep it as it is. This one also I want to copy. And what is this one? Personal data. This one, address. I just only want to display. Let's say मैं copy भी नहीं, मैं सिर्फ display ही करवाना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि employee देख ले सब correct है कि नहीं है. This one is again a work schedule related timings. Let's say I want to only give him a display access. This one, now here I can put change over here as well. एंड आई कैन पुट कॉपी ओवर हियर एज वेल. वे बेसिकली वो कॉपी के अंदर जाके भी चेंज कर सकता है जनरली, बट SAP has provided us these two fields. Generally copy and change works in a very similar fashion only, generally don't have much differences. And this one, display the communication info type, which is more related to your typical email ID and user ID and all those things. आपकी सारी के सारी यूजर आईडी, ईमेल आईडी इस इन्फो टाइप के अंदर स्टोर होती है. सो आई विल हिट एंटर. दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या किया था पहले मैंने हायरिंग के अंदर में ऑपरेशन क्रिएट का परफॉर्म कर रहा था. While performing a promotion action, I'm just copying those things and I'm just displaying those things. I don't want to create a data in the system from scratch. So this is now saved. Similarly, I will go to the info group 1C. New entries. I'll hit copy again. जो सारा के सारा पहले वाला डेटा था मैं वापस से कॉपी कर रहा हूँ.
This time I want to create a transfer action. So even in the case of transfer action, what I'm trying to do over here, I just only want to copy in this case. Okay, this is organization assignment. So I can simply put change over here, which is change के लिए हम mod use करते हैं, modification. This, let's say I want to put it in a display mode. Any kind of operations generally I can use. See, this is a different info group altogether. अगर मैं इसकी value promotion वाले के साथ same भी रखता हूँ ना, it still won't make any difference because this is a different info group. System फिर भी मुझे allow करेगा कि हाँ आप change कर लो, कोई दिक्कत नहीं. This I also wanted to put it into a display mode only. This I also wanted to, okay, so his work schedule may change, right? I'm transferring him, तो उसका work timing भी change हो सकता है. So I can simply put mod as well. That yeah, I want to perform the modification on that employee. In this case, this can also be changed, but as of now, keep it to copy. Anything, you can also go to the mod as well. You can also keep it to the copy as well. Anything that can be performed. And this as a display. His email ID will be the same and his login ID will be the same. Save. Similarly, I can do for कितने हो गए? Promotion का भी मैंने कर लिया, मैंने transfer का भी कर लिया. Let's do the 3 others. That is 1D, which is for, let's say, salary increment or something like that. I'm keeping a different info type for salary increment. Let's say I only want to keep display in this case. In this case also, I only wanted to keep it as display. सब चीज़ें मैं डिस्प्ले पे रखना चाहता हूँ. सिर्फ मैं 0008 इन्फो टाइप जो है, जो कि बेसिक पे का है, उसको मैं चेंज पे रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट परफॉर्म करना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय का. वो तो मुझे चेंज करना पड़ेगा ना. Rest all the things will be the same. Or if I want, I cannot. If I want, I can exclude the other info types as well. I can only keep this single info type in the action. क्योंकि अगर मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट में एक ही इन्फो टाइप एग्जीक्यूट हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ. आई डोंट हैव टू नेसेसरली टेक ऑल ऑफ दीज इन्फो टाइप्स. बट अगेन इट डिपेंड्स किस कंपनी की कैसी पॉलिसी होती है. बट जनरली दीज आर द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दैट जनरली डू इन एसएपी. Now after the salary increment, which part? 1E, which is nothing but the termination. Now see, now try to understand how the things are different in the termination. New entries, copy. अब मुझे ये बताओ कि termination के अंदर मैं क्या करूँ? क्या operation लूँ मैं? What should be the operation that I take in the termination? Copy. Why I'm terminating employee? Like which one? Organization unit में copy लूँ? Yes. Okay. Sure? This time I'm terminating employee. What should I do? Employee को मैं बाहर निकाल रहा हूँ. क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, what is the difference between delete and delimit? Delete करना और delimit करने में क्या difference होता है? Delimit it डेटा सिक्योर भी कर सकते हैं. डेटा सिक्योरिटी वाली बात नहीं है. लेट्स से देखो, डिलीट करना मतलब उसका पूरी तरीके से रिकॉर्ड डिलीट कर देना, कुछ है ही नहीं. डिलिमिट करना मतलब आई एम सेइंग फ्रॉम लेट्स से 2nd of April सिस्टम में किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड 2nd of April तक के ही वैलिड रहेगा. अगर मैं सारा रिकॉर्ड डिलिमिट कर देता हूं तो फ्रॉम 3rd of April 4th of April उसका रिकॉर्ड वैलिड नहीं रहेगा. इन सिंपल टर्म्स इट इज लाइक दैट. डिलिमिट मतलब डेटा को लिमिट करना, डेट को लिमिट करना, आई मीन टू अ पर्टिकुलर डेट. सो
सो बेसिकली डीलिमिट यहाँ पे हम जनरली डीलिमिट यूज करेंगे एंड वी डोंट हैव टू जनरली गो फॉर दिस पर्टिकुलर वन इस केस के अंदर बिकॉज एक्शन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो जाएगा. सो हियर वी विल यूज we don't want this one. सो इन्फो टाइप वन मैं क्या करूंगा डीलिमिट करूंगा इन्फो टाइप को. मैं ये डीलिमिट करने का मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय सिस्टम के अंदर हायर है वो कब तक हायर रहता है. जनरली लेट्स से अगर मैं जैसे PA20 के अंदर जाके देख रहा हूँ किसी भी एम्प्लॉय को. लेट्स से आई एम चेकिंग दिस एम्प्लॉय आई एम चेकिंग दिस एम्प्लॉय. ठीक है, मैं इसका ऑग डेटा चेक करता हूँ. डिस्प्ले क्या दिखा रहा है, कब तक के है ये वैलिड. वैलिड कब तक के है, डिफॉल्ट डेट. दिस इज अ डिफॉल्ट डेट. ठीक है, डिफॉल्ट डेट के लिए वैलिड है. बट जब भी मैं टर्मिनेशन परफॉर्म करूंगा, लेट्स से अगर मैंने इस एम्प्लॉय को आज टर्मिनेट कर दिया तो इसकी एंड डेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी. मतलब उसका सिस्टम में रिकॉर्ड रहेगा, इस एम्प्लॉय का सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड रहेगा. बट यहाँ पे एंड डेट आ जाएगी कि ये एम्प्लॉय जो है ही इज बीन फायर्ड और टर्मिनेटेड ऑन 2 अप्रैल. यहाँ पे जो डेट है वो 2 अप्रैल में चेंज हो जाएगी. इट मीन्स दिस एम्प्लॉय इज नो मोर एक्टिव इन द सिस्टम. ये एक्टिव नहीं है, ही इज अ टर्मिनेटेड एम्प्लॉय नाउ. ही विल ऑटोमेटिकली बी बिकम अ टर्मिनेटेड एम्प्लॉय. ओके, विल सी दैट, विल सी द डेमो ऑफ इट. जब अपन एम्प्लॉयज को हायर करेंगे और फायर टर्मिनेट करेंगे, विल सी द डेमो ऑफ इट, द व्हाट इज द डिफरेंस. सो जनरली वी विल टेक LIS 9. जनरली डी लिमिट का जो कोड होता है वो होता है LIS 9. सो दिस वी विल टेक ओवर हियर. Similarly, info type 2 also needed to be delimited. But info type 2 is generally the personal details. Can I simply click display over here? Does it make any difference? भाई info type 2 क्या है, क्या ये organizational related details है? So this is the personal details. So in simple way, I can also select an operation display. मतलब उसकी पर्सनल डिटेल्स तो मैं डिलीमिट नहीं करना चाह रहा हूँ ना. ठीक है, अगर मैं वो भी डिलीमिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ क्या, कर तो सकता हूँ मैं सिस्टम के अंदर. बट द राइट प्रैक्टिस वुड बी टू कीप इट इन अ डिस्प्ले मोड ओनली. व्हाट अबाउट एड्रेस, this can also be kept in a display mode. But again, some every client has a different policy. Sometimes they also want it to be delimited and everything. So that can also be done. You can also put an operation of delimit over here as well. But plan working time, अब तो वो काम करेगा ही नहीं जब मैं उसको सिस्टम में टर्मिनेट कर रहा हूँ. सो डीलिमिटेड. सैलरी डीलिमिटेड. Communication info type, let's say we also wanted to delimit this one. Save. Let me copy all of this. This will be handy. Go back. कौन सा बचा, टर्मिनेशन हो गया. Rehire. New entries. Hit enter. अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, अब मैं कौन सा ऑपरेशन सिलेक्ट करूंगा. Which operation generally should I consider at this moment? मैं रिहायर कर रहा हूँ, राइट. Copy. कॉपी, पक्का कॉपी. Yes, rehire के लिए तो copy. सबसे पहले इन्फो टाइप के लिए मैं कॉपी यूज करूंगा. ठीक है,
सेकंड मतलब मैं उसका पर्सनल डेटा भी कॉपी कर सकता हूँ, बट जब पर्सनल डेटा मैंने ऑलरेडी पहले वाले एक्शन में डिस्प्ले रख के रखा हुआ है, आई कैन ऑल्सो कीप इट डिस्प्ले एज वेल. Both can be done, but let's say I want to simply copy it, so I can keep it as copy. Addresses I also want to do it as copy, and plan working time I also want to keep it as copy. And at the same time उसकी जो basic पे है, I can even go to mod, but generally now I'm hiring the employees, so first we have to copy, and then we can later on at the later on stage we can create it as this one is also copy, and let's save this one. सो दिस बिकम्स आर रीहायर. तो अभी तक के हमने क्या किया है इन्फो ग्रुप के अंदर? सबसे पहले हमने यहाँ पे मेनू सेट किया इसके अंदर, और फिर क्या किया, मेनू के अंदर हमने ये सारे के सारे कितने एक्शन टाइप मुझे बनाने हैं वो मैंने सारा के सारा यहाँ पे सेट किया. फिर हर एक टाइप को मैंने लेके उसकी इंडिविजुअल कॉन्फ़िगरेशन की कि अगर मैं हायरिंग सेलेक्ट करता हूँ तो कौन कौन से इन्फो टाइप्स को आना चाहिए, अगर मैं प्रमोशन सेलेक्ट करता हूं तो कौन कौन से ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होना चाहिए और कौन कौन से इन्फो टाइप्स को एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन से इन्फो टाइप्स एग्जीक्यूट होंगे अलोंग साइड विथ विच ऑपरेशन, दैट इज द मेन पर्पस, अलोंग साइड विथ विच ऑपरेशन, द नेक्स्ट स्टेप. सो इतना हो गया मेरे पास में. अब नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस फील्ड इज ऑल अबाउट, व्हाई वी नीड दिस फील्ड इन्फो ग्रुप मॉडिफायर. ये हमने मेंटेन क्यों किया है यहाँ पे? वी हैव मेंटेन्ड दिस फील्ड, हर हायर आई मीन हर तरह के इन्फो ग्रुप के अंदर हमने ये फील्ड इसके लिए मेंटेन की है ताकि हम डिफॉल्ट वैल्यूज को सेट कर सके सिस्टम के अंदर. सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू गो टू द इन्फो ग्रुप मॉडिफायर, टू गो टू द इन्फो ग्रुप मॉडिफायर. सो इन्फो ग्रुप मॉडिफायर is all about to set up the default values. Now what sort of default values? तो इसके लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से एम्प्लॉय ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर किया था, एम्प्लॉय ग्रुप्स और सब ग्रुप्स को कॉन्फ़िगर किया था. रिमेंबर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर जब हम क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे हमने एक और चीज़ क्रिएट की थी विच वाज नोन एज एम्प्लॉय स्ट्रक्चर. एम्प्लॉय स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय सब ग्रुप. एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर हमने बोला था ओके दिस इज द सैलरीड एम्प्लॉय, फिर सैलरीड एम्प्लॉय कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड इनटू परमानेंट. हियर इट इज. सो we have created permanent employees E, contract employees F, trainee employees G. उसको हमने कैसे segregate किया था? permanent hourly employee E1, then what we have done, permanent salaried employee E2, then contract hourly employee F1, then what we have done, contract salaried employee contract salaried employee F2, then trainee hourly employee G1. This is what we have created, right? Now हमको यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? Let's see that. So let's delete it. We don't want this. So these are the different nodes that I'm creating. I'm creating a default values over here. किस तरीके से मैं create कर सकता हूँ? Generally, this is a feature which is an igmod feature. Okay, igmod feature के ऊपर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ. There is another way to go on igmod feature as well. I can simply go with the T code PA03, oh sorry, /n PE03 and features के अंदर जाके मैं igmod लिखूंगा and I can go into the chain and I'm back onto the same place. There are two ways of executing this one. दो तरीके से हम जा सकते हैं वहाँ पे. We don't always have to use that particular option only. There are two ways of doing things over here in the igmod feature. So what we need to do over here, we have to create a separate nodes. Okay, nodes अब देखो कैसे create होते हैं. Let's say मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो मेरा employee personal subgroup है, ठीक है, उसको मैं employee group को assign करना चाह रहा हूँ.
let's say I want to assign him as X or something. Let's say I want to assign him for the permanent employee कि permanent employee के अंदर क्या कॉल होना चाहिए. और let's say I want सारे के सारे employee groups जो मेरे हैं, जितने भी मेरे employee groups हैं, उसके अंदर सारे के सारे के अंदर वो सारी के सारी चीजें ही कॉल होनी चाहिए. इसके लिए तो हमने विबग्योर लिखा है वहां पे. So create node, आप जाएंगे field for decision operations. Here you can select these different nodes. But generally info group modifier जो होता है उसको एक ही particular type के हिसाब से configure करना चाहिए, which is first you call the personal employee subgroups. So we have called the different employee subgroups over here. We have called a node. अब जब हम इस node को select करेंगे और अब जब हम create के ऊपर जाएंगे, then we will get the different employee personal subgroups. तो अब हमने कौन से personal subgroups create किए थे वो देख लेते हैं. हमने कौन से पर्सनल सब ग्रुप्स क्रिएट किए थे? E1 E2 F1 F2 and G1, right? So let's go on to that one. E1 E2 E4 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 or E1 E2, oh sorry, E1 E2 F1 F2 and then we have created G1. So I've selected these 5 personal sub area groupings, employee subgroup groupings जो हमने create की थी. So now we have all of these 5 over here. Now what we need to do in this one, we'll select this another node over here. सबसे पहले मैं E1 की बात करता हूँ, ठीक है? E1 select करके मैं यहाँ पे जाऊँगा. I'll be again selecting the field for decision operation. Now I have to select the employee grouping over here. Employee grouping क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे? I am saying employee grouping and फिर मैं employee grouping के ऊपर यहाँ पे जाके I will go on to the create node again and कौन सा employee grouping जो मैंने create किया था, I have created. E1 is for what? Permanent employees, right? That's why E1 E2 is for what? Permanent employees. एक hourly है एक salaried है, but है तो दोनों permanent ही. Here this one. And यहाँ पे जाके मैं ये जो चीज अभी कर रहा था, जो मैंने 7 डिजिट रिटर्न वैल्यू सेट की थी, वो 7 डिजिट रिटर्न वैल्यू मुझे एज अ रिटर्न वैल्यू यहाँ पे पास करनी है. 7 कैरेक्टर वैल्यू जो मैंने वहां पे लिखी थी, आई हैव टू पास इट एज अ रिटर्न वैल्यू. VIBGO file. This otherwise you can delete it. We don't need it. This otherwise we can delete it. We don't need it as of now. So as of now we have done it for E1. As of now we have done it for E1. Similarly we can do it for E2 as well. The same thing, the same type of a configuration. First we will go on to this one, field for decision operation. Here we will select the employee group. Field कौन सी होनी चाहिए? Employee group. फिर एम्प्लॉय ग्रुप के अंदर जाके मैं सिलेक्ट करूंगा कि मेरा एम्प्लॉय ग्रुप कौन सा है. मेरा एम्प्लॉय ग्रुप है ई. एंड देन ई को मेरे को क्या रिटर्न वैल्यू पास करनी है? आई विल गो ऑन टू द नोड अगेन एंड आई विल पास ऑन द रिटर्न वैल्यू इज VIBGYOR, जो मैंने 7 डिजिट कैरेक्टर सेट किया था. दिस अदरवाइज आई डोंट वांट इट, आई कैन डिलीट इट. दिस अदरवाइज यू कैन डिलीट. Similarly, if I अब ये कौन सा एम्प्लॉइज है? F सीरीज के कौन सा एम्प्लॉइज है? What is the difference between F1 and E1? चलो बताओ, what is the difference between F1 and E1? आवरली दिख रहा है दोनों साइड पे, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या है? See, E1 is a permanent employee category. एम्प्लॉय परमानेंट है, बट उसकी जो पेमेंट टर्म्स है वो आवरली है. यहां पे पेमेंट टर्म्स तो आवरली ही है,
पर वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है. ही इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय. F1 इज नॉट अ परमानेंट एम्प्लॉय. सो दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस सेग्रीगेशन. बट मैं सभी के लिए हायरिंग एक्शन एक ही को हायर करवाना चाह रहा हूँ. लाइक मतलब सभी के लिए हायरिंग एक्शन जो दिखे वो विबग्योर के थ्रू एज अ रिटर्न वैल्यू ही दिखनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई एम डिफाइनिंग ओवर हियर. So similarly, if I will go on to the F1, again the same thing, field for decision operation. मैं यहाँ पे select करूँगा employee grouping. Employee grouping field के अंदर here again I will select the employee group. This employee group field over here. I will go on to the create, and then I will select F, contract employees. This is a part of a contract employee, right? Otherwise I don't want it. This otherwise I don't want it over here. I can delete it. And now I will set it up as a return value as same return value. सर आई थिंक लैपी हैंग हुआ है, कुछ भी नहीं शो हो रहा. Sorry. लैपी जो स्क्रीन है ना Yes. वो शो नहीं हो रहा. मतलब एक ही ये जो एम्प्लॉय ग्रुप है उसी पे ही है, जो आप बोल रहे हो उसी पे नहीं जा रहा. आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं. So you are practicing at the same time or what? नो. Can you see the screen now? यस. Is it visible now? यस. So we'll go on to the F2. Similarly, create field for decision operations. Here I will select employee group. This otherwise I can delete it. Employee group, create. I will assign contract employee. कौन सा employee? Contract employee. F. Here I will pass on the return value as VIBG YOR WebGyor. Similarly for G1. Now G1 is just simply different employee which is a trainee employee. Here again I will select the employee group. मैं employee group मुझे assign करना है कौन से employee group को belong करता है G1. This otherwise thing again I can delete it. I will simply put it on employee group. I'll go to create and I am simply saying कि ये G जो employee group मैंने trainee employees के लिए create किया था इसके लिए मैं return value यहाँ पे set करूँगा VIBG YO. Transfer. Save. सो अब ये जो मैंने ट्री यहाँ पे बनाया दिस इज कॉल्ड एज डिसीजन ट्री. ठीक है. अब ये जो मैंने ट्री यहाँ पे बनाया है आई जनरली हैव टू चेक दिस ट्री एंड आई हैव टू एक्टिवेट इट. ओके. सबसे पहले हमको इसको चेक करना पड़ता है एंड वी हैव टू एक्टिवेट इट एज वेल. यू कैन सिंपली कोलैप्स इट एंड लाइक जैसे अगर ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा हो सो नाउ यू कैन सी. सबसे पहले मैंने क्या किया. सबसे पहले मैंने एक मॉड के अंदर एम्प्लॉय सब ग्रुप करके एक फील्ड को कॉल किया. उसके अंदर मैंने जो भी मेरे सब ग्रुप्स थे वो मैंने मेरे जो भी सब ग्रुप्स थे इस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए वो मैंने कॉल इन किए E1 E2 F1 F2 एंड G1 विच आर द सब ग्रुप्स. अब उन्हीं सब ग्रुप्स के अंदर मैंने एम्प्लॉय ग्रुप को कॉल किया. यहाँ पे भी मैंने एम्प्लॉय ग्रुप को कॉल किया. यहाँ पे भी मैंने एम्प्लॉय ग्रुप को कॉल किया. यहाँ पे भी मैंने एम्प्लॉय ग्रुप को कॉल किया. यहाँ पे भी मैंने एम्प्लॉय ग्रुप को कॉल किया. G1 के अंदर G वाला एम्प्लॉय ग्रुप. F2 के अंदर F एम्प्लॉय ग्रुप. F1 के अंदर अगेन F एम्प्लॉय क्योंकि दोनों एक ही का पार्ट है राइट. कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ही है. कॉन्ट्रैक्ट सैलरीड है. कॉन्ट्रैक्ट आवरली है बट है कॉन्ट्रैक्ट ही दोनों. सिमिलरली एम्प्लॉय ग्रुप परमानेंट के अंदर E. सिमिलरली एम्प्लॉय ग्रुप इसके अंदर अगेन E बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द सेम थिंग अगेन. परमानेंट आवरली एम्प्लॉय परमानेंट सैलरीड एम्प्लॉय. अगेन इफ आई हैव टू लुक इसमें भी सभी में मैंने रिटर्न वैल्यू विबग्योर सेट की है. द 7 डिजिट or the 7 character I've set it up the field of 7 character in all of them. Okay. Now I have to check this one. How do I check? I can check with this symbol. There is this symbol which we use to check कि decision tree सही है कि नहीं. It is giving me decision tree is error free and green symbol. It means that it is correct. Now I have to activate it. It will only work once you activate it. अगर आप activate नहीं करोगे तो वो चलेगा नहीं. Here is the thing which is called as feature was generated. So it is activated now.
नाउ गो बैक. ओके, सो हमने क्या किया? हमने आज तीन चीजें की है. वी फर्स्ट हैव क्रिएटेड द info group menu, then we have created the different info groups with the info types, and then at the last what we have did was to set up the decision tree value, which is the igmod feature. Igmod feature, or we generally also call it as info group modifier. Info group modifier. So these three things that we have done. What is the next thing? The next thing is we have to create the personal action types. Personal action types. And then after that, there is a last step. We have to create the different action menus. Action menu sequences. Sequences. So these two steps we will be seeing tomorrow. ये दो steps भी बड़ी हैं, ये हम दो steps कल देखेंगे. But as of now, you can practice today's session following up the recording, or whichever the way you feel. अगर कर पाओ तो खुद से ही पहले try करना. But if not, try to follow up the recording and try to go step by step जिस तरीके से हमने create किया था. ठीक है?